And again, this has happened today. देखो, there was one thing which I told myself before this meeting. That was that this will be this one meeting when I will not be on a monologue, when I will not be continuously speaking and तुम ये करो scolding तो चलो अभी भी हो गई एक तीन लोगों की, लेकिन तब भी I thought this will be that one meeting. I tried to do this. मतलब एक पब्लिक मॉनिटर था, लोगों से आपस में बात कर रहा था, पर ऐसा मैंने कोशिश करी कि मैं बकवास ज़्यादा ना करूँ. दूसरे भी तो गए लोग, औरों को भी बोलते कितना पकड़ा है इसने और इसने. पर having said that, first of all, a very warm welcome to each of you. From Ayush to Gagan to Abhishek to Par, Kartikeya, Alok, Daksh, Shivang, Shardul, Saurabh. Alok coming from Delhi. Some people have just come for this meeting from different cities. I'll try to, acknowledge each of them. Alok, Saurabh, Soumya, Rahul, Gaurav Jayal, again coming from Delhi only for this meeting. And this meeting is his brainchild. He is the one who suggested कि आप ऐसा कुछ करना देखा. Hardeep, Aman also was probably good team. Shiva, Satvik, Karan, Samanika coming from Kolkata, leaving Bengalis behind for this purpose, which is something which is appreciated. Again, Kartikeya also has come for this meeting from Delhi. I don't know how I have forgotten, but he has again come for this meeting, only this meeting from Delhi. इसके बाद Swati, Pallavi, Apurva coming from, I was about to say Jodhpur, which is Delhi now, coming from Delhi. Shubhi, Kashika coming from the gym. Shivam, Sarang again coming from Delhi, only for the purpose of this meeting. Saksham coming from the court of law. Saryu again coming from Faridabad, I should say, and I should say Noida. Shardul coming from Bengaluru. Not Chennai. Karan coming from Canal Road. Manzar again coming from Gurgaon. Gurgaon. There. Vishwas coming, that's a big thing. And Akash. So abhi I had just walked out of the cafe to receive a phone call, and I was feeling as if this is my own residence. कि बाहर सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो फीलिंग बहुत अच्छी आती है. In 99 Kanwal रोड पे लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, वो थोड़ा इनकन्वीनियंस करती है लोगों को. मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले 300 सेकंड में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब लोग बहुत चीज़ें बोल चुके हैं. आई रियली हैव वेरी लेस टू से एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड. वैसे तो एवरी फोटो विच वाज शोन हैड अ स्टोरी. आई वाज थिंकिंग व्हाइल सिटिंग देयर कि मैं ये भी बोलूँगा, मैं इसका बताऊँगा, मैं उसका बताऊँगा. देन आई गॉट कंफ्यूज्ड. That's this one thing when I personally feel very sad and down. I look at those pictures and I remember those stories, and I feel really happy and fortunate to have interacted with so many people. But I'll tell you, when Matt started in June 2011, I'll actually tell you who are the founders, why are they the founders, how it started, because everybody does not know that. Everybody needs to know that, and why they are founders. And I'll give you a very objective view from my side. You are willing and you are free to question, to think what you want to think. I will try my best to clarify if there are questions. When I started with Matt in June 2011, I had a very big problem even to say that I started with Matt. So I remember having called Saryu, I remember having called Akash, I remember having called this wonderful soul Rajat Pandey. I remember Saryu having called Anurag. I remember this extremely dynamic person who definitely is one of those people who really worked and only for work. It was never for anything else. It was Parth Joshi who was sitting there. So there are 4 of us from that door जिसको बोलते हैं, who are still here. Saryu, Akash, Parth and myself. The 3 others have different stories. I will not tell you. So 4 of us from that Yug are still there when it started. जब शुरुआत हुई, we were on the verge of registering at many occasions throughout 2011 to 2015. बहुत occasions पे एक मीटिंग हुई, पब्लिकली हम बोलने लग गए थे कि हम 7 लोग फाउंडर्स होंगे. ये 4, एक वन मिस्टर अनुराग चौहान, एक समर्थ खन्ना, Rajat Pandey. Yes.
कभी वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाता था क्योंकि उसका टाइम नहीं लगता था. रजिस्ट्रेशन वॉज tedious work, it was paper work, drafting, उसका टाइम ही नहीं लग पाता था हमें कभी. तो हमने रजिस्टर किया ही नहीं. 2011 से 2012 हुआ, फिर 13 हुआ. 13 में we got some shocks from one of the 7. He has already been named. I don't want to take it. That is one thing I told myself before this thing. So we got one shock. I felt glad and grateful to God I did not register because I was registering with the 7 people, and if one of those had done something like forging the Chief Minister's signature or opening a parallel ID, that would have been extremely dangerous. So we did not register. I further delayed it. उसके बाद certain things happened. मैं तो जोधपुर ही था 5 साल, मुझे तो इतना पता भी नहीं चला, मैं इतना आता रहता था यहाँ पे. But things changed. Saryu went out, Parth went abroad to Brazil. There was उतना touch नहीं रहा for a long period of time. And in that long period of time, a very good breed came up. मतलब breed ही बोलूँगा मैं इसको. Manzar entered the scene, and his sacrifices for my friends, I'll tell you. People say a lot, but I have always had this inherent advantage of living in Dehradun. It's my hometown. It's most of our hometown. किसी और शहर में जाकर वहाँ पे इतनी सेवा करना, वहाँ का कूड़ा उठाना, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से 2 मिनट के नोटिस में मिलना, भागना, उस शहर के लिए गाली खाना, सफाई करना, एक बहुत बड़ी चीज़ है. उस बंदे ने किया है एंड बहुत अच्छे से किया है. इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है. दोस्ती की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन कई बार वो भी बहुत टेस्टिंग टाइम में रही है, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मैच जो रहा है उस पर कभी किसी को संदेह नहीं हो सकता. तो उसका एक एंट्री थी, आई कुड नॉट हैव इग्नोर्ड. उसके बाद जो धक्के खा रहे थे, झटके लग रहे थे, आई वॉज एडवाइज्ड एंड आई रेड द सोसाइटीज एक्ट. द सोसाइटीज एक्ट सेज दैट एनी ग्रुप विच स्टार्ट्स, द पर्सन हु इज स्टार्टिंग इट, द प्रिंसिपल फाउंडर, नीड नॉट कीप the most active people in the group. The question is of trust. Keep those who you trust, because ऐसा ना हो जाए कि वो टूट जाए. That is why when that question came up to me, I had the chance to make my sister, who was in an IT company, whose CV could have benefited a lot, as one of the founding members of MAC. I chose not to, because I did not want this impression. But I kept my mother in the founding members of MAC. Why? Because यहाँ पैसों की बात थी. I have blind faith on Shardul, but he was not going to be here. He had to go to work. So इसलिए I kept my mother in the founding members. Then and do you know friends, one thing which I really want to tell each of you. There is one person जो आकाश स्टार्ट से था, इसमें कोई डाउट नहीं है. सरयू स्टार्ट से थी, पार्थ स्टार्ट से था, विश्वास पांडे स्टार्ट से था. विश्वास पांडे has an interesting story. So in June end, when I was about to leave for Jodhpur, I called a meeting and I said I want to close down MAD now. And why? Because 1 महीना हो गया है, अब मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करके आ जाऊँगा, फिर इसको एक समर और वेकेशन प्रोग्राम रखेंगे. This one person said no. Who are you? You go. हम कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद से for various reasons he could not stay very active on the front end, but always there on the back end. But I digressed a little on Vishwas Pandey. He's someone who makes people digress. But I was coming to Shardul. Do you know friends? I did not include him in the 7 people I was initially counting. थोड़ा समझो, थोड़ा confusion. पहले आकाश सरयू तो वही है, अनुराग था पहले, पार्थ था पहले, रजत था, समर्थ था. But I did not include Shardul, even though he was from the first and even though we were very good friends in school. I used to think, जैसे किसी ने बोला ब्राइटलैंडर्स बहुत आए थे, फर्स्ट मीटिंग में चर्चा हुई थी हम WWF के पॉइंट्स लाएंगे, हम ये करेंगे, ठीक है. उसके बाद से उनको कभी किसी एक्चुअल सोशल वर्क का कोई टाइम नहीं मिला. शार्दुल यूज्ड टू कम साइलेंटली एंड यूज्ड टू थिंक. मैं सोचता था शार्दुल को जब मैंने फर्स्ट मीटिंग में इनवाइट किया था कि मैं इसको करूँगी, ये क्या करेगा, ये तो 2 मिनट चल जाएगा, बोर हो जाएगा. हाउ रॉन्ग आई वाज. मतलब मैन हैज बीन अ टेल ऑफ माय हैविंग बीन प्रूव्ड रॉन्ग इन अ सीरीज ऑफ वेज, एंड इट स्टार्ट्स इन दिस सीरीज. He never ever asked me for foundership or his name in any press note. Never ever, कभी भी नहीं. He never ever asked me for it in anything, and he had to be forced into foundership in 2015. Forced. मतलब literally, it took a lot of convincing.
एंड इवन व्हेन ही वाज नॉट देयर, कभी उस साथ में वो था तब भी नहीं था, तो इसीलिए ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग। वो हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन में, फिलोसोफर स्टोन में एक देयर इज वन थिंग दैट यू नो पावर इज बेस्ट सूटेड टू दोज हु डू नॉट सीक इट, एंड ही नेवर sought it. He is today the founding secretary of MAN. But why to include say someone like Saryu कि she was there, उसके बाद वो नहीं है, क्यों? And that is the reason. पहले तो she was extremely active for the first 2-3 years, and we did not have many females joining us during those times. She was actually the only face. वो आई, उसकी वजह से हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि एक लड़की है, लड़कियां हैं, हाँ एक लड़कियां, उसी का नाम हाँ बहुत है, सरयू वगैरह हो जाता था, रजवी थी। उसके बाद भी जब वो बाहर गई, वो टिस में थी, लेकिन उसमें शी इज स्पेशलाइजिंग मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम टिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन crucial occasions, crucial events, she was there, and the question of trust was always with her. She was passing with flying colors in the question of trust. She was never someone just made out of it. Why was Apurva there? I really cannot comprehend कि why would a person coming from another city would do so much studying. चलो मैंने तो तब I'll be very honest with you, I was learning. MAT made me learn the law. MAT made me learn RTI. MAT made me learn administrative law, environmental law. So many things I learned so much from MAT, apart from benefiting as a person. What did Apurva learn in typing those press notes? And let me tell her, it's not just press notes. press मत करो, इतने letters भी तो हैं, एक फिर से लिखवाना शुरू कर दूँगा। तो so many letters, what did she benefit? There was no benefit. Yes, she was doing it. She deserved it somewhere. She deserved it somewhere. But then there was a question of first among equal. There were so many who deserved. So many. That was a very difficult question. And I had to choose 7. Today, the existing founding committee, which is registered, finally I registered in 2015. We registered in 2015. And I'm making it very clear so that everybody knows who are the founders of MAT. Are, apart from myself, Shardul, Akash, Saryu, Manzar, Apurva, and my mother. These are the 7 people who are the founding members of MAT. But they need not be referred to by their designation. It is immaterial. It was a formality to be completed. It is just something which is the legal identity of MAT today. And after you guys in the room today, each of you become a formal member of MAT. I hope some answer to that. Whatever. Each of you become a formal member of MAT, and you are entitled to that designation as a member of MAT, and nobody else except you. Why? Because the criteria is 10 activities, and that is what we have very objectively followed. Everyone who has completed 10 activities was contacted for this meeting today by Shardul. Everyone, except of course a couple of them and the third one. Everyone who have already left, and you know things are done. But today, what we have done is एक code of conduct है members के लिए, सबके लिए, बहुत मेहनत से ड्राफ्ट किया हुआ by Mr. Sarang Gordon, who has really sacrificed his last many nights during judiciary training to just make this code of conduct, and he's made it really well. आप लोग एक बार पढ़ना, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव लगना नहीं चाहिए। उसमें हमने ये बोला है कि आप थोड़ी सच्ची निष्ठा से काम करें, आते रहिए, इन्वॉल्व करिए। और पता है मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैट की एक ब्यूटी मैंने पर्सनली बहुत देखी है कि I say something which Karan can find offensive, but I would say you need not come in every activity. I would say you need not come in every activity. You need not. You need not come for 6 months, 1 year, 2 years, but feel connected with us. Feel connected with us, and that's the bond which unites. Say Abhinav and Kartikeya and so many of us. पता है हम लोग जो रातें गई हैं, सुबह उठ के आए हैं, कितना काम किया है, कितनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, कितनी बार पिंटू सर को बताया है कि इसकी 100 आए कंप्यूटर, कितनी बार। तो मतलब पता है आप चाहे बहुत रेगुलरली बताओ, आप कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड फील करो। पता है आई वाज फीलिंग इस बार जब मैंने कॉन्टेक्टेड अ लॉट ऑफ द पुरानी टीम, आकांक्षा वैश, अभिनव बहुगुणा, Abhinav too could not come because he had to urgently leave for his village, otherwise he would have been here. Manvendra could not come because he was sick, but he's still there. But please feel connected. This is really a family which can really help you grow. Apart from that, what I would want to say is 4th of September 2016 is not the first such big meeting of mine. Bigger meetings happened in June, मेरे घर में.
75 was the strength in one of those. A bigger meeting happened in Garhwal Sabha last year on October 4th. A bigger meeting happened on 8th of June 2016 at Hotel Inderlok. आकाश और सिंह सैफ्रन लीफ में करते हैं, हमने इंदरलोक को करा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन वो मैराथन के उससे करा, दैट वाज अ पार्ट ऑफ मैराथन. अच्छा, मुझे फंडिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, सब कुछ बोला जा चुका है. मुझे बस ये बहुत अम्यूजिंग चार्जेस लगते हैं. आकाश ऐसे बोल रहे हैं सब अपने पैसे से दे देते हैं. आकाश की जेब में जितना बड़ा छेद मैट ने किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा. वी हार्डली पे हिम फॉर एनीथिंग विच ही रेडीली प्रोवाइड. सबके प्रिंट्स हो गए, कितनी बार लोगों को प्रिंट्स के लिए बोला जाता है, वो लोग आ जाते हैं, लेकिन तो सब लोग अपने जेब से बहुत बार दे चुके हैं. और फंडिंग पता है फ्रेंड्स, देखो जब र्यूमर्स आती है ना, आपको ना थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या कोई ग्रांट थी, कैसे मान लोगे. देखो लोगों ने मानी ये बात, पता है आपको, ये चीफ मिनिस्टर वाली बात क्यों मानी कि हमें फंडिंग मिलती है और हम पैसे खा रहे हैं. क्योंकि पब्लिक इमेज में क्या है कि नाइट की राउंड टेबल मीटिंग हो रही है, सीएम के साथ चाय हो रही है, मैं बगल में बैठा हूँ, तो वहाँ बात हो कि लोग कैसे, ये एक इम्प्रेशन आ सकता है लोगों में, पर आप में नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि पैसे तो तब लेंगे ना जब हम कोई ग्रांट लेंगे, गवर्नमेंट से कुछ काम करेंगे. हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम क्यों इस तरीके की बातों में. देखो और ना बोलते हुए मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्लीज इसके बाद जॉइन अस फॉर आलू पूरी. एंड दिस हैज बीन अ स्टोरी ऑफ immense sacrifices, immense, and not just mine, immense sacrifices from each of you, most of you, and you know it. Each of you know आपको घर से कितनी डांट पड़ी है, कितनी डांट पड़ी है, कितनी बार दादाजी को समानिका बोल चुकी है कि 15 मिनट में पहुंच रही हूँ और रास्ते में वो निकली नहीं है. कितनी बार सात्विक नौजवान पैदल आया है रेस कोर्स से मेरे घर क्लास 7-8 में. अब कौन सी में आ गए तो कितनी बार दक्ष बेचारा जब छुट्टियों से आया है तो उसको यहीं खींच लिया गया है. सो मेनी स्टोरीज. कितनी बार बेचारे शरद के संडे प्लान्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि संडे मॉर्निंग को एक्टिविटी का मैसेज आया है. आलोक के फैन फॉलोइंग जो उसकी रैप उसमें कमी हो गई क्योंकि वो अब समाज सेवी भी तो है. नहीं पता कितनी बार, मतलब there have been so many stories of each of you. When I'm looking at your faces, they are like translucent things that I can see, those stories inside each of your heads. Soumya Sharma, मतलब imagine it's from such a young age doing so much in everything. Swati Singh, पता है, she is this new star into man, doing all these wall paintings and much more. An exceptional personal friend, and as well as again coming from another city in Delhi. कितनी बार उसके पापा को पूछ चुके हैं 5 मिनट लेट हुई तो उन्होंने, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन कितना मेहनत करनी पड़ी मैराथन में लाने के लिए. Then I can never forget that one phone call with Saksham's Nana ji. मैराथन के लिए रात हो गई है. I don't even remember that time, and he's still there in the drawing room. हरदीप बेचारा अभी जब मुझे लेट हो रही है 5 मिनट. It's been going on. That is another new star into man. Let's go. He is probably not just the strongest in this room, and I mean it. मतलब with the way he pushed my car on a chadai when it stopped working. But he's also the most strong-willed, coming from Hardoi. But I will not even take his permission to narrate his one personal story. I know many people's personal stories, मैं उसको नहीं ला रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं ले आऊँ क्योंकि ये मुझे कुछ बुरा वो नहीं करेगा. Adarsh, his father passed away when he was my age. Okay, 4 years ago. मतलब 4 years ago तो क्या, when he was there, there's his mother जिसको अपनी झांसी की रानी बोलते हैं, his younger brother, and there is he is here. मैंने सोचा तुम काम कर रहे हो यहाँ पे. He is here just to be a part of us, and he hates when he's not called even for some small things जो he will do probably nothing in, and then there are things where he does everything. And he is just one of the many such exceptional people I would have never come to know had not been there.
his father passed away with a snake bite and he was telling it like कि कुछ हुआ ही नहीं है. मैं कभी कुछ सोचता हूँ मेरी बड़ी समस्याएं हैं कि क्या है इतना सब कुछ हो रहा है. But यार look at these stories यार. Each of you know your stories. You know your stories and some of you know I know them as well. And I really admire and appreciate each of you for this. And मतलब this is just one case जो मैंने because he would not have taken offense तो वो नहीं होता. बाकी पल्लवी भाटिया is also another new star. But my friends, प्लांटेशन ड्राइव में जितनी जल्दी मैंने इसको काम दिए, that was something amazing. And देखो गगन धवन तो मैड में पहले भी था ना, उसको था जाना पहचाना, उसने तो पहले भी भ्रमण बहुत बढ़िया किया था स्कूल का प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन उसके साथ उसने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करा. That was something exceptional. Who am I missing out? कशिका का बहुत ज़्यादा ही जिक्र होता ही रहता है. She's always an important part. Apart from that, सौरभ से मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि वो 2014 की फील वापस ले आया, अपना कैमरा लाया और बहुत नेचुरल फोटोग्राफी करी. एंड आई एम रियली प्रेजिंग हिम फॉर दिस बिकॉज मैं उसको बहुत बार इस पे ताने मार चुका हूँ कि तुम 2014 में सब कुछ और दिल्ली से आ जाए. यस, सौरभ इज आल्सो लैंडेड इन दिल्ली फ्रॉम मतलब जस्ट टुडे. My ticket was booked on Tuesday morning, but I came on Sunday for the meeting. Just for this, मतलब I appreciate that you are in the company of people who have made these sacrifices. Sacrifices by themselves are a very pure feeling. And we are all in the midst of it. Saran Vodbole has also landed today morning. There is Shivam, there is इनके बारे में बोल चुका हूँ. But I think a lot, but I don't want to go further. Has to be said about Karan also. Karan is much more than the person. Karan is much more than the person who just went to Gupt Kashi to distribute those food packets. He is this person who's wanting to learn. And there have been occasions when maybe things were not the best in MAD. Many people say, मुझे कुछ लोग आके बोलते हैं MAD में आजकल बड़ी नेगेटिविटी चल रही है. देखो पता है नेगेटिविटी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट है, वरना एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको 5.5 साल हो गए हम क्यों किसी और की बात करनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स है, पर क्या वो नेचुरल नहीं है? क्या ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का पार्ट नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स. नेगेटिविटी आएगी, 5.5 साल से चल रहे हैं एक ही फॉर्मेट में, तो वो तो आएगी. लेकिन द पॉइंट इज आप अपना किस तरीके का मोटिवेशन उसमें रखते हैं.